नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। आज वीडियो में आप सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 3 यूनिट 3 किसी 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करी। यूनिट 3 द यूनिवर्सालिटी ऑफ राइट्स सार्वजनीन अधिकार किसी 1 मार्क क्वेश्चन आप शेयर करी। आप पूर्व यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी वीडियो बन सारी। जदि आप देखी ना चैनल को विजिट कर देखिपारे। The concept of rights first appeared in the theory of days which existed in the state of nature ना natural law ना first concept of rights अधिकार धारणा first प्रथम क्यों theory बा सिद्धांत दृश्यमान होइतिला ना natural law सिद्धांत दृश्यमान होइतिला which existed in the state of nature in the present day situation rights have been regarded as death claims ना in the वर्तमान समय रे जो सिचुएशन राइट्स हैव बीन रिगार्डेड as युक्तियुक्त रैशनल माने युक्तियुक्त दाबी को सहित सम्मान। क्लेम राइट्स एंटिटाइल देयर होल्डर टू लिमिट द डेज ऑफ अनदर पर्सन ना लिबर्टी। क्लेम राइट्स एंटिटाइल देयर होल्डर टू लिमिट द लिबर्टी ऑफ अनदर पर्सन। These rights are those rights which are based on human consciousness तो कौन मोरल राइट्स नैतिक अधिकार जो राइट्स रही आर दि राइट्स ऑफ व्हिच बेस्ड जो बेस होती मनुष्य चेतना पर बेस होती। कोर्टेसी इज एन एग्जांपल ऑफ दिस राइट ना मोरल राइट्स। कोर्टेसी इज एन एग्जांपल ऑफ मोरल राइट्स गोटे नैतिकता राइट अधिकार गोटे उदाहरण। राइट टू लाइफ इज एन एग्जांपल ऑफ द राइट्स दिस राइट्स सिविल राइट्स माने बंचर अधिकार गोटे कौन राइट अधिकार उदाहरण ना नागरिक अधिकार गोटे उदाहरण। राइट टू लाइफ राइट टू होल्ड ऑफिस पब्लिक ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस राइट ना पॉलिटिकल राइट्स। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। राइट टू वर्क इन एन एग्जांपल ऑफ दिस राइट। राइट टू वर्क कौन हम इकोनॉमिक राइट्स। These rights originated from the practice of promise keeping ना contractual मान चुक्ति संबंधी अधिकार originate from the practice of promise keeping. These rights are those rights which are accepted in and enforced by the state ना legal rights are those rights which are accepted and enforced by the state. These rights are those rights which provide opportunity to each person to lead a civilized social life. Civil rights are those rights which provide opportunity to each person to lead a civil माने नागरिक जो सिविल राइट्स अच्छी से दोज राइट्स विच प्रोवाइड कौन कर प्रोवाइड जोगे दूचे सुजोग गोटे ना प्रत्येक पर्सन को टू लीड सिविलाइज माने आधुनिक गोटे आधुनिकता को उन्नत आड़ को जीवा सोशल लाइफ रे। दिस इज एन एक्सप्लिसिटली नॉन क्वेंटिलिस्ट एथिक ना कांतिनिज्म इज एन एक्सप्लिसिटली नॉन कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिक। नॉन कॉन्सिक्वेंटलिस्ट माने कौन ना परिमाणवादी है कौन कॉन्सिक्वेंटलिस्ट और नॉन माने गैर परिमाणवादी। These rights encompasses privileges and powers तो कौन एक्टिव राइट्स इनकम्पासेस प्रिविलेज एंड पावर्स। क्रियाशील अधिकार होची कौन ना गोटे इनकम्पास माने प्रिविलेज माने स्वाधिकार पावर्स। नेक्स्ट देखिए द राइट्स दिस राइट्स व्हिच इनकम्पास क्लेम्स एंड इम्यूनिटीज तो कौन पैसिव राइट्स माने कर्मवाच्य अधिकार से कौन कौन इनकम्पासेस माने आबद्ध करवा क्लाइम एंड इम्यूनिटीज माने उन्नत आ दाबी कर कौन पैसिव राइट्स व्हिच encompasses claims and immunities. The division of human rights into 3 generations was entirely proposed in 1979 by the 3 jurist Des the Prudential Theories of Justice Karl Marx. Karl Marx division of human rights into 3 generations follow the 3 watchwords of the Des Revolution French Revolution कौन से 3टा जो डिविजन करते लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी स्वतंत्रता समानता आउ कौन भातृत्व। द फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स समटाइम्स कॉल्ड डेस राइट्स ना ब्लू राइट्स। डेस ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर ना फर्स्ट जनरेशन राइट्स आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर। नेक्स्ट देखिए डेस ह्यूमन राइट्स आर रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड बिगिन टू बी recognized by the governments
after World War II na second generation. These human rights are fundamental economic, social and cultural in nature. Na second generation rights, human rights are fundamental economic, social and cultural in nature. Second generation rights are sometimes referred to as death rights. Na red rights, second generation rights are sometimes referred man निर्दिष्ट to कौन red rights. The term third generation human rights remain largely unofficial, just as the also used moniker of death right na green rights. Next time देखिए who calls rights as condition of social life लास्की कहले rights होची गोटे कौन सामाजिक जीवन गोटे शर्त condition. Who uses a new term called clan rights? Norman Berry uses a new term गोटे term यूज करथिले clan rights और दाबी अधिकार बोली से गोटे term को यूज करथिले. Who made rights as a part of the state? ना utilitarians माने उपयोगितावादी माने निर्मित करथिले जे अधिकार होची गोटे कोन स्टेट गोटे पार्ट. Who calls rights as entitlement तो कोन एंड्रयू हाइवुड हकदारी. Who calls करथिले राइट as a entitlement माने हकदारी. Who defends rights in the light of idealism? T.H. Green defends rights in the high light of idealism. डिफेन्स माने परिभाषित करथिले आदर्शवाद को जो लाइट ऑफ द आइडियलिज्म टी.एच. ग्रीन करथिले अधिकार को. नेक्स्ट देखिबा which country recognized moral rights in its copyright act? ना कनाडा country recognize माने मान्यता प्राप्त कला जे नैतिक अधिकार इन इट्स कॉपीराइट माने अधीन नियम कोन एक्ट गोटे कॉपीराइट एक्ट सेटा की कला रिकॉग्नाइज कला मोरल राइट्स को कनाडा कला. Who said rights are those conditions of social life with no man can seek in general to be himself at his best? किए कहते राइट्स होची कोन दोज कंडीशन से परिस्थिति ऑफ सोशल लाइफ रो विदाउट व्हिच नो मैन कैन सीक माने सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ इन हिज एट बेस्ट. लास्ट की कहते हु सेड राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मेन्स वोकेशन एज मोरल बीइंग. किए कहते राइट्स आर कोन पावरफुल नेसेसरी फॉर फुलफिलमेंट कर कोन ना मेन रो वोकेशन माने पेशा आ मोरल नैतिक प्राणी गोटे कौन ना टी.एच. ग्रीन कहते टी.एच. ग्रीन सेड राइट्स आर पावर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मेन्स वोकेशन एज ए मोरल बीइंग. Who said rights are nothing more nor less than those social conditions which are necessary or favorable to the development of personality? ना कौन बेनी प्रसाद said rights are nothing more than less than those social conditions which are necessary or favorable to the development of personality. Who defends rights in terms of positive liberties and negative freedoms? तो ईसा बर्लिन डिफेन्स करथिले डिफेंड राइट्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टीज माने स्वतंत्रता एंड नेगेटिव फ्रीडम माने नकारात्मक स्वाधीनता. राइट्स आर लिमिटेड बाय द यूटिलिटी प्रिंसिपल कौन ना सॉरी भूल हम राइट आर लिमिटेड बाय द व्हिच प्रिंसिपल कहले से यूटिलिटी माने कोन उपयोगितार प्रिंसिपल गोटे. राइट्स आर लिमिटेड बाय सीमित अधिकार सीमित होइछि कोड सीमित ना उपयोगितार प्रिंसिपल जो कछि सीमित होई रहिछि. तो एथिला यूनिट 3 रो किछि 1 मार्क्स क्वेश्चन आर नेक्स्ट वीडियो में आम यूनिट 4 रो आपन सब वीडियो अपलोड करबी. तो एही पर वीडियो पे आप माने जोड़ी जानतु आ जतो 1 मार्क्स होला पर नेक्स्ट रे 2 मार्क्स 3 मार्क्स सब आपन सब शेयर करबी. तो एही पर वीडियो पे आपन माने चैनल जोड़ी जानतु. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो.